Hi you all my beauties, welcome back to my channel. I'm Naina, and if you're watching me for the first time, then please take a moment to subscribe to the channel, and you can also follow me on my Instagram. I will link it down below. Now today's video, as you all know, is a weekly skincare routine, like what all steps you should follow and some of the product recommendations that I have for you guys, and mostly all the brands. Well, I guess all the brands are Indian, and yeah, without delaying, let's just start the video. So the very first step that we follow in our skincare is cleaning out our face with a good face wash that suits your skin. So I have this Moha's face wash for you guys. Now this contains neem, cucumber, aloe vera and rose. अगर आपकी oily to combination skin है या आपकी acne prone skin है, then you should always look for the ingredients that contains neem and cucumber in it. वो बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं acne prone skin के लिए. I mean, these two ingredients are your best friends guys. अगर आप dry skin में से हो, then also you can try out this face wash, because ये face wash आपके face को बिल्कुल भी dry out नहीं करेगा, and you know वो moisture retain करता है even after using this one. So after face wash, the next step that you should follow in your weekly skincare routine is going with a face scrub. So here I have this Everyuth chocolate and cherry face scrub. You can already see it mentions here to use it 2 to 3 times a week. I would not recommend going more than that, because that is sufficient for your skin. Because अगर आप उससे ज़्यादा रगड़ोगे या मलोगे अपनी स्किन को, you know, हर alternate days पे अगर आप face packs and scrubs use कर रहे हो, it is also not at all healthy for your skin. Now this is how the scrub looks from inside, and it has got very minute particles of the scrubbing beads that are not at all harsh on your face. अब आप जब भी अपना face scrub करते हो तो आपको 60 seconds से ज़्यादा you know उसको scrub करने की ज़रूरत नहीं है, because that is the amount of time it takes to remove all the dead skin cells from the upper layer of your skin and अच्छे से cleanse कर देता है, and it is also effective on blackheads. I have seen the results, so you can definitely try this Everyuth Naturals face scrub. It is a very good product to start off. Now after scrubbing, what I usually go for is a good face pack and leave it for good amount of 20 to 25 minutes. I'm using this Organo's Activated Charcoal face pack. Now this face pack contains the goodness of Dead Sea mud, activated charcoal and also rosehip oil. Now rosehip oil is a very good ingredient if you are facing with hyperpigmentation. It will definitely help reduce that. Charcoal is a very good ingredient if you are facing with any impurities on your skin, and it will definitely help you reduce the acne and pimple problems, and also आपके pores को बहुत अच्छे से clean कर देता है if you have oily skin. Even if you have dry skin, even the dry skin people suffer the problem of open pores, so ये बहुत अच्छे से उनको cleanse out कर देता है. I would highly recommend you going with this face pack because it has an effective result. Now after masking, I move on to toning, and this is the toner I have been using recently. This is Mamaearth's vitamin C toner, and it contains the goodness of cucumber and lemon to it. Again, cucumber helps you reduce and minimize your pores very effectively, and this toner इसमें बिल्कुल भी कोई भी fragrance नहीं है, and ये सारे harsh chemicals से भी free है. So अगर आपकी acne prone skin है या आपकी sensitive skin है, you can definitely try out this toner. It is very effective. Now after toner, I usually like to spritz a little amount of this rose water from Kama Ayurveda. बहुत ही calming सा effect देता है ये rose water, and ये rose water alone आप use कर सकते हो as toner. ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले भी आपको एक toner की ज़रूरत है. You can alone use this rose water as toner. I would agree that हाँ ये थोड़ा सा on the expensive side है. You only get 50 ml of product for 300 rupees, which is a lot for a rose water. So I have another recommendation for you guys. You can use this Moha's rose water. It contains the goodness of rose and aloe vera. Now if you guys have been following me, you guys know it that I already reviewed all the skincare products from Moha. I will link the video in the description. You can go and check it out if you haven't. So उसमें I told you about this product in detail. But हाँ, अगर आप इसको compare करोगे with Kama Ayurveda, then definitely I would recommend you going for the Kama Ayurveda rose water. But for the price point of view, ये वाला product भी अच्छा है, effective है. It is a very good product to start off with the rose water mists. After using toner, I move on with the serum, and currently I have been using this La Organo's vitamin C serum. Now this serum contains 20% vitamin C and also hyaluronic acid to it.
अब हाइलोरॉनिक एसिड क्या होता है ना, दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी और वो हमारी बॉडी में मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। बट यू नो जैसे जैसे हमारी स्किन एज करना स्टार्ट करती है, हाइलोरॉनिक एसिड स्टार्ट्स रिड्यूसिंग इन आवर बॉडी। एंड जैसे जैसे हाइलोरॉनिक एसिड हमारी बॉडी में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, हमें हमारी स्किन ड्राई और फ्लेकी दिखती है एंड ऑल्सो वो फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स भी विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s देन दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स एंड उसमें हाइलोरॉनिक एसिड शुड बी द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट विटामिन सी, इट इज़ अ वेरी रिच एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। नाउ विटामिन सी सिरम्स जो आजकल आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सुन रहे होगे, विच आर वेरी पॉपुलर राइट नाउ। नाउ व्हाट हैपेंस इज विटामिन सी सिरम्स जो होते हैं वो बॉडी में कोलाजन को मेंटेन करते हैं। और कोलाजन क्या होता है ना कि वो आपकी स्किन सेल्स को फर्म रखने में हेल्प करता है। सो अगेन इट इज़ ऑल्सो एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। So what you can do is you can try out this serum from La Organo because it contains both the goodness of vitamin C as well as hyaluronic acid to it. Now again you should be very careful while using these active concentrates to your skin. अगर आप अभी न्यू हो, अगर आपने अपने फेस पे कोई भी ऐसे एक्टिव कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ करने नहीं शुरू किए हैं, देन यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस सीरम्स वंस अ वीक। ओके, फिर धीरे धीरे उसका आप टाइम बढ़ा सकते हो। यू कैन यूज़ इट ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक एंड देन आप डेली अपने स्किन केयर में इनको इंक्लूड कर सकते हो। करंटली व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम यूजिंग दिस सिरम ट्वाइस अ वीक एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज़ मैं टोनर के बाद इसे डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। आई जस्ट टेक अ 1 पंप ऑफ दिस सिरम, उतना इनफ होता है पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए। एंड द सेकेंड मेथड ऑफ यूजिंग अ विटामिन सी कॉन्सेंट्रेट इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक एनी एलोवेरा gel. Currently I'm using this Moha's aloe vera gel and it is very good and budget friendly, but हाँ ये थोड़ा सा stickiness feel कराती है for starting 2 to 3 minutes and उसके बाद इतना टाइम लेती है to absorb in your skin. But if you are fine with that then you can definitely go with this aloe vera gel. So I take a pump of this aloe vera gel and take 1 to 2 pumps of this vitamin C serum, mix them properly and then apply it all over my face. पूरे फेस को और नेक एरिया को कवर करने में हेल्प कर देता है 1 से 2 पंप। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड ऑफ दिस सिरम। 1 से 2 मिनट आप उसको दीजिए एंड लेट इट एब्जॉर्ब इनटू स्किन ऑन इट्स ओन एंड उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर टू गो ऑन विद द मॉइस्चराइजर। करंटली आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है सो ये एक मैट लुक देता है आपके फेस को एंड अगर आप ऑयली कैटेगरी में हो सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर एंड डेली यूज़ के लिए इट इज़ अ कन्वीनियंट एंड बजट फ्रेंडली परचेज। सो नेवर एवर फॉरगेट अप्लाइंग सनस्क्रीन। इवन इफ अगर आप घर पे हो तब भी दिन में सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। करंटली आई हैव बीन यूजिंग दिस बायोटिक्स बायो मॉर्निंग नेक्टर सनस्क्रीन। इट कंटेन्स SPF 30 इनटू इट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन डेली यूज़ के लिए। अगर आप ऑयली स्किन कैटेगरी में हो एंड यू नो आपको ऑयल एंड सीबम प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस बिकॉज ये हाँ थोड़ा सा ऑयली टेक्स्चर दे देता है आपके फेस को एंड थोड़ा सा टाइम भी लेता है टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन। But for dry skin people and normal skin people you guys can definitely try this one. अगर आप ज़्यादातर घर में रह रहे हो आजकल एंड बाहर जाना ज़्यादा होता नहीं है तो SPF 30 sunscreen is perfect for you. You just need a little amount of this sunscreen and just apply it all over your face and you're good to go. The last step to follow and you should not forget that as well is going on with the lip balm and I have this Biotique's Bio Berry Lip Balm. This is my absolute favorite lip balm. Oh my god, it smells like actual berries. इतना अच्छा स्मेल करती है एंड ऑल्सो इसको अप्लाई करने के बाद ये आपके लिप्स को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल पिंक टिंट लीव करता है which is again what I like on my lips. Now I have been getting these comments कि Biotique is not a good brand. वो अपने ingredients छुपा देते हैं and they only mention key ingredients. Okay guys, that is a fact and मैं उसे बिल्कुल भी deny नहीं करूँगी. It is a brand जो सिर्फ key ingredients को mention करती है, which is not at all a healthy propaganda to follow for these brands, especially if you are an Indian brand. तो आपको कुछ भी छुपाने की क्या ज़रूरत है यार। We know कि chemicals and all इन सब के बिना कोई भी स्किन केयर चीज़ नहीं बनती है। सिर्फ इन चीज़ों पे किसी भी ब्रांड को बैश आउट कर देना या उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करना is not at all a healthy step that I believe.
एंड अगर कोई प्रोडक्ट किसी ब्रांड का है जो सच में इफेक्टिव है एंड विच इज़ वर्थ शेयरिंग विद यू गाइज, देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज एंड इट इज़ टोटली अप टू यू गाइज, आपको उसको फॉलो करना है या नहीं. इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. प्लीज़ रिमेंबर दैट मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आई जेन्युइनली यूज़ देम ऑन माई फेस एंड देन आई शेयर इट विद यू गाइज. सो दैट वॉज इट इन द वीकली स्किन केयर रूटीन एंड येस, आई फॉलो all these steps and also I always remember to keep myself hydrated and I have a lot of fibrous foods and fruits. You guys know it if you follow me on my Instagram. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please इसे like ज़रूर कर दीजिएगा and also don't forget to share it with your friends and I will see you soon in my next video. Till then, take care. Bye.